Assalamu alaikum everyone. In our previous lectures, we were discussing about the different types of the faults, and in different types of the faults, we have discussed about the symmetrical fault as well as unsymmetrical fault. जब हमने unsymmetrical fault की बात की तो हमने कहा कि there can be different types of the fault. For example, there can be some line to line fault, there can be some line to ground fault, and there can be some line to ground to neutral fault, and so on. So there were the 6 different types of the fault. So whenever you have to do analysis of the unsymmetrical fault, we said कि हम कुछ assumptions करते हैं. Assumptions हमने क्या की कि unsymmetrical fault को हम symmetrical components में convert कर देते हैं. Let's see regarding the sequence impedances. जब भी किसी पावर सिस्टम की हम बात करेंगे तो जो भी एलिमेंट होगा पावर सिस्टम का, इट विल ऑफर different impedance into different phase sequence components of the current, which may not be the same. For example, किसी हम impedance की बात करते हैं किसी भी piece of equipment की, तो positive sequence current की बात करेंगे तो वो different होगी. इसी तरह हम negative sequence current की बात करेंगे, it will be different. And similarly, if you are talking about the zero sequence current, it can be difficult to assume कि ये तीनों आपस में कितनी डिफरेंट है until and unless आप कैलकुलेशंस नहीं करेंगे. So we can conclude कि जब भी हम unsymmetrical fault calculations की बात करेंगे तो each piece of equipment will have 3 values of impedance. One is known as positive sequence impedance, second is known as negative sequence impedance, and similarly there will be some zero sequence impedance. जो इम्पीडेंस कोई भी इक्विपमेंट या सर्किट फॉर एग्जांपल पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के लिए ऑफर करेगा या अपोज करेगा करंट को, उसको हम पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस का नाम दे देंगे. सिमिलरली नेगेटिव करंट के लिए हम नेगेटिव इम्पीडेंस, एंड सिमिलरली देयर विल बी सम zero sequence impedance as well. So there are the following points which should be highlighted when you are dealing with the different types of the sequence impedances. कि जब भी हम किसी 3 phase बैलेंस सिस्टम की बात करेंगे तो कोई जो भी आपके पास इक्विपमेंट है या सर्किट है वो सिर्फ एक इम्पीडेंस ऑफर करेगा, दैट इज पॉजिटिव या नॉर्मल सीक्वेंस करंट कह देते हैं. और this is expected because of the absence of negative and the zero sequence current in the 3 phase balance system. यही वजह है कि जब भी हम 3 phase balance system या symmetrical fault की बात करते हैं तो फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस की बात नहीं करते, हम एक ही सीक्वेंस की बात करते हैं, that is known as positive sequence. लेकिन in a 3 phase unbalanced system, each piece of equipment or circuit will have 3 values of impedance. यानी अनबैलेंस आपका सिस्टम हो गया, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आ गया, तो फिर आप पॉजिटिव की बात भी करेंगे, नेगेटिव की बात भी करेंगे और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस की बात भी करेंगे. So the positive and negative sequence impedances of the linear, symmetrical and static circuits. Static circuit में आपके ट्रांसमिशन लाइंस, केबल्स, ट्रांसफार्मर्स, या जितने भी आपके स्टैटिक लोड्स हैं जो वेरी नहीं कर रहे या जिसमें आपने assumptions कर लिया कि योर लोड इज स्टैटिक, इज नॉट वेरिंग या डायनामिक नहीं है, तो आर इक्वल एंड सेम as those used in the analysis of the balanced conditions. And this is due to the fact that impedance of such circuits is independent of the phase order, provided the applied voltages are balanced. And it may be noted that positive and negative sequence impedances of rotating machines, for example, ये वो कोई सिंक्रोनस मशीन है या इंडक्शन मोटर है, उनकी नॉर्मली डिफरेंट होगी जो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है. इसी तरह जो जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस है उसकी अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करेगा कि जीरो सीक्वेंस करंट आपके पास क्या है, एंड इट इज जनरली डिफरेंट फ्रॉम द पाथ टेकन बाय द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव सीक्वेंस करंट. इसीलिए जो जीरो सीक्वेंस करंट है इट इज यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम द पॉजिटिव और द नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस. So whenever you have to talk about the sequence impedances of the different power system elements, तो they are the different जो सबसे ज्यादा मेजर आपके तौर पे
पावर इक्विपमेंट यूटिलाइज होते हैं, दीज आर दी सिंक्रोनस जनरेटर्स, these are the transformers, and these are the transmission line as well. सिंक्रोनस जनरेटर क्योंकि एक रोटेटिंग मशीन है तो पॉजिटिव सीक्वेंस भी आएगा, नेगेटिव सीक्वेंस भी आएगा और जीरो सीक्वेंस भी आएगा। और अगर पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस की बात करें, इट विल बी इक्वल टू द सिंक्रोनस इंपीडेंस ऑफ द मशीन। सिंक्रोनस इंपीडेंस क्या होता है, ये सिंक्रोनस नेचर क्या होती है, या मशीन फंडामेंटल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ये हमने भी ऑलरेडी इसका थोड़ा बेसिक इसका एनालिसिस किया था कि व्हाट इज नोन एज ए सिंक्रोनस मशीन। इसी तरह जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस अगर सिंक्रोनस मशीन में बात करें तो इट इज अ वेरिएबल एटम, और अगर इसकी वैल्यू आपको नहीं गिवन तो इट मे बी अज्यूम दैट इट इज इक्वल टू द पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी पॉजिटिव सीक्वेंस है, उसके बाद आपकी नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होती है सिंक्रोनस में, और जो आपकी जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस है इट इज अ वेरिएबल आइटम। ये हम जब डिफरेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह अगर ट्रांसफार्मर्स की बात करें तो ट्रांसफार्मर्स में आपकी जो पॉजिटिव सीक्वेंस इज इक्वल टू योर नेगेटिव सीक्वेंस, एंड यू कैन से बोथ आर इक्वल टू द टोटल इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। और अगर जीरो सीक्वेंस की इंपीडेंस की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस इफ देयर इज सर्किट फॉर ईच करंट, और अगर जीरो सीक्वेंस करंट में कोई सर्किट नहीं है फॉर अर्थ करंट सॉरी, तो फिर आपकी जो जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस है वो इनफिनिट होगी। इट मींस कि जब भी हम न्यूमेरिकल आपको जब कोई प्रॉब्लम दी जाएगी और ट्रांसफार्मर में फॉर एग्जांपल आपको नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस नहीं दी गई या पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस नहीं दी गई, तो आपको कुछ सिनेरियोज या अजम्पशंस बता दी जाती हैं, तो इट विल बी अंडरस्टूड कि आपकी जो पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस के इक्वल होगी। सिमिलरली इन ट्रांसमिशन लाइन में भी आपकी इंपीडेंस पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होती है, और जो जीरो इक्वेंट सीक्वेंस इंपीडेंस की बात करते हैं ये भी एक वेरिएबल आइटम है, और इसमें ये 3 टाइम्स भी हो सकती है एज कंपेयर टू योर पॉजिटिव सीक्वेंस। जब भी हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस करते हैं तो कुछ हम अजम्पशंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो आपने पावर सिस्टम एनालिसिस में भी जब लिखा होगा तो जो ईएमएफ या जो वोल्टेज जिसे आप कहते हैं, तो जनरेटेड ईएमएफ जो आपकी सिस्टम है इट इज ऑलवेज इन सीरीज विद योर पॉजिटिव सीक्वेंस ओनली। सेकंड assumption is no current flows in the network other than due to the fault। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो सर्किट है इस वक्त उसमें सिर्फ फॉल्ट करंट आपका फ्लो कर रहा है। जो इम्पीडेंस है फॉल्ट की उसको हम जीरो अज्यूम कर लेते हैं, एंड द फेज रेजिस्टेंस shall be taken as the reference phase. So in case of unsymmetrical fault, EMF per phase are denoted by ER, EY and EB, that is for red, yellow and the blue, and the terminal potential difference per phase by VR, VY and VB. For example, unsymmetrical fault की अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं these are for the single line to ground fault। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में डिफरेंट टाइप के आपके जो 4-5 फॉल्ट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि कौन सा फॉल्ट कितने परसेंटेज अकरेंस उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो इट वेरीज फ्रॉम फॉल्ट टू फॉल्ट कि वो ओपन सर्किट है या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। इसी तरह सिंगल लाइन टू ग्राउंड की फॉल्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फॉल्ट आता है यही आता है हमारे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई 3 फेज सिस्टम है विद एन अर्थिड न्यूट्रल और उसमें कोई फॉल्ट अकर हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं दैट इट इज सम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर ऑन द रेड फेज और एज शोन इन द फिगर। फॉर एग्जांपल दिस इज योर फिगर एंड लेट्स सपोज कि आपका इधर कोई रेड जो आपके पास फेज है उधर आपके पास कोई फॉल्ट अकर हो जाता है। whenever there is some fault here you will see that कि आपको पता है कि आपके एक से हम जो रेड में जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएंगे, इट विल बी इक्वल टू सम जीरो बिकॉज आपका जो लाइन है ये फॉर एग्जांपल ग्राउंड को टच हो गई है।
सो जो टर्मिनल पोटेंशियल है आपका रेड फेज का, जो कि आप कह सकते हैं न्यूट्रल और रेड के दरमियान है, वो आपका ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, एंड यू कैन से दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द blue and y will be equal to 0. Now you know that there are the three sequence currents, that is zero sequence currents, that will be equal to 1/3 IR plus IY plus IB is equal to 1/3 IR. जस्ट क्योंकि आपका IB से भी करंट जीरो फ्लो करेगा, IB से भी और IY से भी, एंड ओनली करंट फ्लोइंग इज थ्रू दिस रेड, क्योंकि आपका ये ग्राउंड को टच हो गया, तो करंट को सबसे ज्यादा जो इजी पाथ मिलेगा वो रेड फेज से मिलेगा, और जो तीनों का करंट है वो उस तीनों की बजाय किससे सिर्फ फ्लो करेगा, रेड फेज से, एंड इट विल बी इक्वल टू जीरो सीक्वेंस प्लस पॉजिटिव सीक्वेंस प्लस नेगेटिव सीक्वेंस। और हमें पता है कि जब भी हम सिंगल टू ग्राउंड की बात करेंगे तो आपके जीरो और जो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होंगे, so you can write that IR will be equal to your 3 I naught, and I naught current आपके पास किसके इक्वल होगा, it will be equal to IR by 3, that is the average of three components, that is red, yellow and blue. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह अगर फॉल्ट करंट की बात करें तो उसका एक्सप्रेशन भी आप ड्राइव कर सकते हैं, जैसा कि हमने पर यूनिट सिस्टम में भी पढ़ा था कि हम इनको अगर फॉर एग्जांपल जैसा पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करें तो दिस इज द टोटल ईएमएफ एंड दिस इज द Z1, Z2 एंड Z3। अब आपके पास Z1, Z2 और Z0 जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए इंपीडेंस हमने लिख ली इक्विवेलेंट सर्किट में, this is for the negative sequence impedance and this is for the zero sequence component. So total current voltage will be E will be equal to I into the current voltage drop across these impedance. So you can write that ER is equal to I1 Z1 plus I2 Z2 plus I0 Z0 plus VR, that is the voltage of the red phase, and which will be equal to 0 as there is fault on the red sequence as it is grounded. और आपको पता है जो आपकी I1, I2 और I0 है, they are equal, so putting the values you will get that the fault current is the current that is flowing through the R phase, and it will be equal to 3 I naught. So putting the values of the I naught from here, from this equation, you will get it will be equal to 3 ER over Z1 plus Z2 plus Z naught. सो इसमें जो हमने अजम्पशन की थी कि फॉल्ट इम्पीडेंस आपके पास जीरो होती है, तो अगर ये हम अजम्पशन रिमूव कर दें तो एक्सप्रेशन आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा, एंड देयर विल बी सम एडिशन ऑफ दिस कंपोनेंट एज वेल, एंड इट मे बी एडेड हियर इफ द न्यूट्रल इज नॉट ग्राउंडेड। अगर न्यूट्रल को हम ग्राउंड नहीं करते तो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस जो आपकी है वो इन्फिनिट होगी और आपका जो फॉल्ट करंट है वो जीरो होगा। दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज नो पाथ एग्जिस्ट फॉर द फ्लो ऑफ द फॉल्ट करंट। Similarly, you can find out the phase voltages at the fault, कि आपके पास जो E1 है it will be equal to ER. Similarly, आप रेड फेज के लिए अगर आपने टोटल सीक्वेंस वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं, इट मींस कि you have to find out for the positive, for the negative and for the zero sequence, and you should know that V1 plus V2 plus V0 should be equal to 0. So this is the equation we have already derived. जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने A मैट्रिक्स डिफाइन किया था जिसके कोफिशिएंट थे 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, where alpha is equal to 120 degree and alpha square is equal to 240 degree. So from here this is the summary of the results, that your fault current is given by this expression. The current through Y and the blue will be 0. The red sequence voltage will be equal to 0, and your yellow and the blue voltages can be find out with the reference of
V0, V1 and V2, which you have find out with the help of these expressions. Similarly, second condition is what will happen if there is line to line fault. For example, if the same is the sequence circuit, कोई line to line fault आ जाता है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो दो phases हैं, फॉर एग्जांपल टच आपस में हो जाते हैं येलो और ब्लू, तो इट मींस कि दोनों phases की जो voltages है वो similar हो जाएंगी, and you can write that Vy will be equal to Vb and IR का जो करंट है वो जीरो फ्लो करेगा, and Iy plus Ib इन दोनों का sum will be equal to 0. So again, taking the red phase as the reference phase, you can write that I naught will be equal to 1/3 IR plus Iy plus Ib, and it should be equal to 0. For example, ये दो phases आपके टच हो गए हैं और इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों सेम पोटेंशियल में आ जाएंगे, that is Vy will be equal to Vb. So expressing in terms of components of the red line, you can write that V naught plus alpha square V1 plus alpha V2. If they are the two different phases, so अगर हम phase sequence reverse कर दें, it will be equal to V naught plus alpha V1 plus alpha square V2. So by taking V1 and V2 on both sides as common, you will get that V1 is equal to V2 here. So second condition is, that is your Iy plus Ib should be equal to 0. So putting these values with reference to red, that is I naught plus alpha square I1 plus alpha I2, and similarly putting it here, you will get at the end that your I1 plus I2 should be equal to 0. Now if you have to find out the fault current, so this is your circuit, that this is the I1 flowing and this is the I2 flowing, that is this is the V1 and this is the V2. So from here it is clear that your I1 will be equal to this expression, that is E over Z1 plus Z2, और जो direction है I1 की और I2 की, they will be in opposite direction. So from here you concluded this as the fault current, and similarly if you have to find out the voltages, you have concluded that your E0 and E2 will be equal to 0 and E1 will be equal to ER. So putting these values, you will get the expression for the phase voltages of the VB and the Vy as well. So summarizing all the results, your red current will be equal to 0, your yellow and blue will be in opposite in direction, and your voltages, that is the yellow and the blue, will be equal to this expression. Similarly, there can be some double line to ground fault. You have to see by yourself. Similarly, उधर हमने बात की थी कि आपके डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में आपका जो IR will be equal to 0 और आपके येलो और ब्लू भी इक्वल होंगे, लेकिन डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में डिफरेंस क्या आएगा? They both will be equal to 0 as both have touched to the ground potential here. So similarly, first of all, you will find out what is the fault current, then you will find out that what are the phase voltages. For example, आपके पास कोई 3 phase 10 MVA 11 kV का जनरेटर है, उसको हमने अर्थिंग की हुई है, उसकी सॉलिड अर्थिंग की हुई है विदाउट एनी रेजिस्टेंस उसके न्यूट्रल पॉइंट को. तो relevant impedances of generator and feeder in ohms are as under. For example, जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है जनरेटर की भी गिवन है, फीडर की भी गिवन है. सिमिलरली नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस भी गिवन है और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस भी गिवन है. फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी एक फॉल्ट आ जाता है, फेस टू अर्थ आ जाता है कोई भी फार एंड ऑफ द फीडर में, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल्ट करंट and you have to calculate the line to neutral voltage at the generator terminals. अब जैसे कि डायग्राम आपके सामने है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास जो फॉल्ट आया है ये कौन सा फॉल्ट है. तो आप देखेंगे वन फेस टू अर्थ फॉल्ट है, इट मींस लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स है, एंड यू कैन यूटिलाइज द इक्वेशंस फ्रॉम देयर, दैट इज फ्रॉम द लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास जो EMF है रेड फेस की, इट इज इक्वल टू
11 into 10 raised to power 3 in अंडर डिवाइडेड बाय √3 एज जैसा कि आपको 3 फेज में गिवन था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सिंगल फेज में कन्वर्ट कर दिया एंड इट विल बी इक्वल टू 6350 वोल्टेज. नाउ द सेकंड थिंग इज यू हैव टू कैलकुलेट द इम्पीडेंसेस. आपको इम्पीडेंस गिवन है, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस. आपने जनरेटर और जो आपके पास फीडर है उन दोनों की आपने कैलकुलेट कर ली. एक दफा कैलकुलेट कर ली तो आपको पता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में आपके जो तीनों सीक्वेंस हैं वो इक्वल होते हैं, दे आर इक्वल टू ER over Z1 plus Z2 plus Z0. So simply you have to put the values, you will get the current that is equal to minus J846 ampere. And you know that इसमें आपके पास जो रेड फेज में आपके पास जो फॉल्ट करंट है इट इज 3 times ऑफ द जीरो सीक्वेंस और द पॉजिटिव और द नेगेटिव सीक्वेंस करंट, जो कि तीनों आपस में इक्वल हैं. जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे फॉर 3 फेज, you will get के टोटल आपके पास फॉल्ट करंट कितने हैं. Similarly, then the next step is you have to find out that how much the line to neutral voltage of the red phase. It can be find out with the help of these equations and so on. Similarly, there are the different types of the numericals and you have to do by yourself. इसमें अगर कोई